So हमने पिछली बार last time we have done Schrodinger wave equation. So I am writing it again. This is the Schrodinger wave equation. Curly square psi curly x square plus curly square psi upon curly y square plus curly square psi upon curly z square plus 8 pi square m upon h square e minus v psi is equal to 0. Now, if you have to write Schrodinger wave equation in a very short form, you can write it like this: H psi is equal to E psi, where H is the total energy operator, which is called as the Hamiltonian operator. This is the one form of Schrodinger wave equation. You can write it like this also: H psi is equal to E psi. This is the operator. Those who are from non-medical background, they will study about operators in their this physics class. So Hamiltonian is also a operator H. This is the sign of the operator. This is one form of writing the. ये एक तरीका है Schrodinger wave equation को लिखने का. So H, this is the total energy operator, and this is equal to T plus V. This is kinetic energy operator. This is V is potential energy operator. Now, if we solve this Schrodinger wave equation, we will get value of energy and psi. Energy means energy which is associated with the electron, and psi, it tells us roughly about the wave function, where at a particular instant there is you can find the electron. So what kind of solutions are acceptable for Schrodinger wave equation? किस तरह के solutions जो हैं वो physically acceptable हैं Schrodinger wave equation के लिए? कैसे होने चाहिए वो? Psi must be single valued, that is it must have one definite value at a particular point in space. Psi को जब हम इसके सॉल्यूशंस को निकालते हैं, जब हम Schrodinger वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो जो psi की वैल्यू है वो वन वैल्यूड, इसकी एक वैल्यू आनी चाहिए. मतलब कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में इट शुड हैव अ डेफिनेट वैल्यू. देन फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए. ऑब्वियसली कैलकुलेट it could be calculated. Finite होनी चाहिए. Then psi must be continuous at all points in space, that it must be defined at all positions in space and cannot change abruptly from one point to next. Obviously psi जो है wave function जो है it should be continuous in space, and its value जो आएगी वो abruptly का मतलब एकदम से ना बदल जाए. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए एक उसकी दो वैल्यूज में, जो अलग अलग पॉइंट पे आप ले रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए. मतलब फर्क नहीं होना चाहिए, एब्रप्ट चेंज नहीं होना चाहिए, वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए. देन psi must be normalized, that probability of finding the electron over all space must be 1. Such a wave function is called as normalized. Probability of finding electron over the space must be 1. मतलब yes, 1 means yes, there is probability of finding the electron over whole space. जितना भी हम space study कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को find out करने के लिए, उसमें उसकी probability 1 का मतलब है कि unit probability, yes, that there exists a electron at particular instant at a particular position. Normalized और orthogonal wave functions हम अभी पढ़ेंगे next part में. Then you will be able to understand what is meant by psi must be normalized. Then next we have that psi must become zero. Psi must become zero at infinity. That is, for large distances from the nucleus, it must become smaller and smaller. The atom must be finite. Means obviously the electron is going to exist within the nucleus, within the atom. एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम के अंदर ही होगा. इट विल बी इनसाइड द एटम ओनली. जितना ज्यादा the larger the
for large distances from the nucleus is it must become smaller and smaller. The atom must be finite. जितना ज्यादा आपका डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से, जितना ज्यादा होगा द वैल्यू ऑफ साई जो है वेव फंक्शन, द वैल्यू ऑफ साई दैट विल बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, इट विल decrease, it will keep on decreasing, but the value will be finite. मतलब it means it will be, वो calculate करने वाली होगी, वो finite होगी, it won't be infinite. And at infinity, अगर आपको ऐसा लग रहा है, because the size of the atom is finite, it is not infinite, we are not taking atom as infinite, तो psi की value at infinity, in infinity means which never ends. So atom has a confined space, ऐसा तो नहीं है कि atom end नहीं होगा, atom has a confined space, तभी psi की value 0 होनी चाहिए infinity पे. At infinity means where there is no end, where there is no influence of nucleus, at that point the value of psi should be 0. Then psi must be single valued, finite, continuous and normalized. This is the conclusion of all these points कि psi single value होना चाहिए, finite, continuous and normalized. Then what are their two terms, eigenvalues and eigenfunctions? What are eigenvalues? They are definite values of energy for solutions of Schrodinger wave equation which have physical significance. So whenever we eigenvalues are the values of energy. Whenever we find a solution to solve psi को हम कोई वेव फंक्शन लेते हैं, उसको कोई हम सॉल्यूशन देते हैं, सॉल्यूशन मीन्स उसको वी फाइंड, जैसे एज वी डिड इन केस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जब हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव किया था तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया था उसको, साई इज इक्वल टू a sin 2πx अपॉन लैम्डा, दैट वाज द सॉल्यूशन फॉर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, फिर हमने उसको सॉल्व किया था. तो जो एनर्जी की वैल्यू हम इनको जो एनर्जी की वैल्यू आती है ऑन सॉल्विंग द सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दे मस्ट बी फिजिकली ऑब्जर्वेबल, दे शुड हैव अ फिजिकल सिग्निफिकेंस. और उन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज. एंड व्हाट आर आइगन फंक्शंस? दे आर the solutions of Schrodinger wave equation which have physical significance and they correspond to definite energy values. Eigen values का मतलब होता है they represent, yes, eigen values जो आती हैं हमारी एनर्जी की वैल्यू, पर्टिकुलर जो eigen value आएगी वो पर्टिकुलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगी. उन एनर्जी की आइगन वैल्यू से जब हम आइगन फंक्शन को सॉल्व करेंगे तब हमें आइगन वैल्यू मिलेगी. फाइन, जब हमें आइगन वैल्यू मिलेगी उस आइगन वैल्यू से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स विच ऑर्बिटल, किस ऑर्बिटल को ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है आपकी ये रिप्रेजेंट करती है. सो नेक्स्ट वी हैव सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर. Psi, as I've told you, it is amplitude of electron wave and it is called as wave function. And psi square is square of psi. It is probability density of finding electron at a point. Yes, what is the probability of finding electron at a particular point? That is defined by psi square. So psi square is your probability density. Probability of finding electron at a particular point. Psi itself does not represent probability of finding the electron because this would mean that psi should always be real valued function, 0 or positive. Because अगर हम probability निकालें किसी चीज की तो वो हमेशा या तो वो 0 होगी, मतलब आपकी कोई भी probability नहीं है किसी इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की. दूसरा हो सकता है कि वो पॉजिटिव है. yes, either yes or no means 0 or positive. Either the value will be positive means yes, there is probability of finding the electron at the particular point, or 0 means there is no probability of finding the electron at a particular point. But जो psi की हमारी wave function की value आती है, it sometimes it is
positive, sometimes it is negative, sometimes it is imaginary value, which is not possible. तो हमारा psi जो है it does not represent probability, but your psi square will represent probability, because अगर psi की value negative भी आएगी तब भी इस negative का square you know that is always positive. So psi square represents your probability density of finding electron at a particular point. Psi itself represents the wave function for an electron. So this is all for today. Next part we will do orthogonal and normalized wave functions in the next class. Thank you.